Hi, welcome you all to the next session of marketing, that is marketing and salesmanship of your FIBCom. As you all know, in the previous session we actually started with the topic that is price mix and price, and what are the element or the variables of price mix. Before starting today's session, that is importance of pricing, that is objectives of pricing, I would just in 2 minutes would like to recall what we studied in the previous session. We studied what is price. Price is basically an amount what the buyer is ready to pay for the goods and services which he purchased or he consumed for. Clear to it? But it is very difficult to explain the price इन टुडेज़ वर्ल्ड. इकोनॉमिस्ट के लिए प्राइस का मीनिंग कोई और है, फिर कंज्यूमर्स के लिए प्राइस कुछ और होता है, एंड different people defines price as differently. But in simple sense, price is an agreement between or the value between the buyer and the seller, wherein the buyer agrees to pay and the seller agrees to give the goods on that price. Clear to it? Okay, then next comes the price mix. Price mix is nothing but the variables which the marketing uses for getting more and more of demand for the product, and consumer, once the demands are there, company produces the goods and services. Higher the production, higher will be the larger will be the economies of scale. Lesser the production, lesser will be the economies of scales. तो वेरिएबल जो है, जो मैकेनिज़्म है प्राइस के रिलेटेड, दैट मैकेनिज़म्स आर कॉल्ड एज where price mix. Basically, price mix is nothing but a guideline or a rules and regulation what the company frames with respect to price for the product what the consumer is ready to pay. There are two types into it. Yeah, there are two components. One is discount and other one is the credit policy. Discount is nothing but the amount or the concession what is given to the buyers by the seller is called as discount. And credit, terms of credit is nothing but the policies of credit what the company frame फॉर इट्स प्रोडक्ट. क्योंकि आज का जो ज़माना है वो ज़्यादातर क्रेडिट पर चलता है. हायर द क्रेडिट, higher will be the goods amount sold and higher will be the economies of scale of any company. Clear to it? But डिस्काउंट में आगे चलकर और चार वेरिएबल्स है, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, then we have cash discount, and then we have seasonal discount. Clear to it? This was what we learned. And the third aspect was resale price maintenance. Resale price maintenance is nothing but the resale price maintenance is the profit margin what the seller will earn on the margin on the MRPs. This is the funda which is applied by the marketer to avoid or to protect the interest of the consumer, wherein intermediary should not earn much profit by charging higher amount for the product. And resale price maintenance is that price under which the manufacturer will not sell its product. Clear to it? Okay, now let's begin with today's session, that is importance of pricing. कि pricing जो हम करते हैं, प्रोडक्ट को जो हम प्राइस लगाते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ first one is the importance of pricing as a function of marketing is brought out from the following point. Price is essential to marketing. Price is a matter of great importance to both the buyer and the seller. Buyer and seller दोनों के लिए प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट होता है. In marketplace, in money economy, without price there can be no marketing. और अगर प्राइस नहीं है प्रोडक्ट को तो मार्केटिंग नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अल्टीमेट एम एक मार्केटर का क्या होता है, वो अपना प्रोडक्ट सेल करे और उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अर्न कर सके. अगर प्रोडक्ट को प्राइस ही नहीं होगा तो मार्केटर अपने एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग कभी भी वेस्ट नहीं करेगा.
Price denotes the value of a product or services expressed in terms of money. प्राइस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का वैल्यू और सर्विसेज जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है वो. Only when a buyer and a seller agrees on the price does the exchange and the transfer of ownership takes place. जब एक बायर और सेलर बायर एग्री हो जाता है प्राइस देने के लिए, तभी ही एक्सचेंज हो जाता है, जहाँ पर बायर प्राइस देता है और सेलर पैसे लेता है. फर्स्ट वन वॉज प्राइस इज असेंशियल टू मार्केटिंग. सेकेंड ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग क्या है? प्राइस अलोकेट रिसोर्सेस इन अ फ्यू मार्केट इकोनॉमी and to some extent in a controlled economy the resources can be allocated and relocated by the process of price reduction and price increase. Price is used as a weapon to realize the goals of the planned economy as to allocate resources towards the sector which have priority for the planning point of view. अगर प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं होगा तो उस पर कितने रिसोर्सेज यूज़ करना है ये पता नहीं चलेगा. Until and unless we don't know the price of the product, we won't be able to allocate the resources properly to that sector. Clear to it? इसीलिए हमें प्राइस अलोकेट रिसोर्सेस या ये हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग का. नेक्स्ट वन है प्राइस डिटरमाइन द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जैसे प्रोडक्ट की प्राइस होती है वैसे ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटरमाइन करता है. अगर लोग हायर प्राइस के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दैट मीन्स द सेलर्स और द बायर्स हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दे हैव हाई अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी एंड परचेसिंग पावर. Price influence consumer purchasing decision. It reflects the purchasing power of money and thus reflect the general standard of living. Lower the price in an economy, the greater will be the purchasing power in the hands of the consumer and higher will be in the standard of living. क्लियर कि जैसे प्रोडक्ट की प्राइस होंगी, लोअर द प्राइस इन एन इकोनॉमी द ग्रेटर विल बी द परचेसिंग पावर. अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर ज़्यादा होंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करने की कैपेबिलिटी में रहेंगे. क्लियर? और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा. इसीलिए ये एक अदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस है प्राइसिंग का. नेक्स्ट वन है प्राइस रेगुलेट डिमांड. अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम है प्रोडक्ट की तो उस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा. इसीलिए प्राइस जब हम किसी प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं तो हमें बहुत क्रूशियली वो प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज करनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर ही प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर ही अल्टीमेट डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इज़ डिपेंडेंट. प्राइस रेगुलेट डिमांड. प्राइस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पी ऑफ 4 P's. सब 4 P's में जैसे प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो 4 एलिमेंट्स है इसमें सब में इम्पॉर्टेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट जो है मार्केटिंग का वो प्राइस है. द मार्केटिंग मैनेजर कैन रेगुलेट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस. अगर मार्केटिंग मैनेजर को प्रोडक्ट का डिमांड को रेगुलेट करना है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो सिंपली वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर और कम कर वो प्रोडक्ट को रेगुलेट कर सके. टू इंक्रीज डिमांड रिड्यूस द प्राइस एंड टू रिड्यूस द डिमांड इंक्रीज द प्राइस. हाउएवर इन एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल डिमांड, price could be used by those who are familiar with the danger involved in using the price as a mechanism to control the demand. As the demand does imposes, price can run the effectively of well convenienced marketing program. Clear to it? This was the pricing importance what we have studied. So please go through the points. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you.